Hello, good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. If I am audible, please let me know in the comment box. Yes, I think I am audible clearly. So today we are going to see the in continuation with our hormonal drugs acting on hormonal system. We was started with that, and today we'll see in continuation with that next part, that is a corticosteroids. So again, it is important, corticosteroids. Okay, we have already seen the hormonal system from anatomy physiology point of view. After that, we have seen the drugs related to anterior pituitary hormones. Okay. Now we'll see the corticosteroids and related drugs. After that, we have already seen the diabetes, so diabetes I am not going to cover again. And after that, we'll see the local hormones, means leukotriene, prostaglandins, and all that. And before that, we'll take a reproduction system from HAP point of view. After that, we'll see the hormones, gonadal hormones. So today we'll see the pharmacology of glucocorticoids. So again, this is important, and you can expect 2 questions from this. So glucocorticoids, okay, because corticosteroids may you have glucocorticoids and you have mineralocorticoids and 6 steroids, right? So out of that, if you say a term corticosteroids, that's mostly means glucocorticoids. So pharmacology of glucocorticoids or glucocorticoids and related drugs, right? So you know that adrenal gland is situated on the kidneys, and adrenal gland will produce hormones. So there are 3 areas, 3 parts of adrenal gland: adrenal cortex, adrenal medulla, you know. So 2 parts are there. Adrenal cortex, there are 3 parts of adrenal cortex also. So adrenal gland will produce the hormones known as a corticosteroids, right? Adrenal cortex will release the steroids known as glucocorticoids, mineralocorticoids, and 6 steroids. So you know that these 3 hormones are produced by adrenal gland. कौन सा है? First one is a glucocorticoid, second one is a mineralocorticoids, and third one is a and some part of androgen. These are the 3 types of hormones produced by adrenal gland. Now these hormones are produced by the adrenal gland present on the kidney, particularly adrenal cortex part of your adrenal gland, and this adrenal cortex is controlled by pituitary gland, you know, and pituitary gland, you know, that is controlled by hypothalamus. तो एड्रेनल जो कॉर्टेक्स होता है, एड्रेनल कॉर्टेक्स आपके ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स एंड एंड्रोजन, ये 3 टाइप के हार्मोन प्रोड्यूस करता है. 3 टाइप्स ऑफ हार्मोन्स दे आर रिलीज्ड बाय एड्रेनल कॉर्टेक्स. नाउ कॉर्टेक्स इन टर्न्स इज इन अ कंट्रोल ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन. तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, दैट विल रिलीज ACTH एंड व्हिच विल स्टिमुलेट द एड्रेनल कॉर्टेक्स. सो एड्रेनल कॉर्टेक्स इज कंट्रोल्ड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड, but pituitary gland itself is controlled by hypothalamus. So hypothalamus will release one hormone known as a corticotropic releasing factor, CRF, that will act on a anterior part of pituitary to release the ACTH. The ACTH will act on a adrenal gland to release the glucocorticoids, mineralocorticoids, and androgens, right? Basically this and hypothalamus, then your pituitary gland and adrenal gland.
It is known as the HPA axis. HPA axis. Why HPA axis? Because adrenal gland is controlled by pituitary, which is okay, and pituitary is controlled by hypothalamus. So H for hypothalamus, P for pituitary, and A for adrenal gland, right? So it is known as a HPA HPA axis. So this is known as HPA axis. So adrenal hormones are in turn controlled by ACTH released by pituitary, and that is itself is controlled by hypothalamus via corticotropic releasing factor, so known as a hypothalamus pituitary adrenal axis. Hypothalamus pituitary adrenal axis, right? Now introduction. What are the corticosteroids? So corticosteroids क्या है? Corticosteroids are nothing but these are the hormones produced by adrenal gland under the control of pituitary. So pituitary will release one hormone. Pituitary gland will produce ACTH, adrenocorticotropic hormone, and ACTH will stimulate the adrenal gland to release the corticosteroids. That is a glucocorticoids, mineralocorticoids, and sex steroids, right? But pituitary itself is under control of hypothalamus. तो हाइपोथैलेमस से CRF कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग फैक्टर रिलीज होता है, वो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है टू रिलीज द ACTH. ACTH विल एक्ट ऑन एड्रेनल ग्लैंड टू रिलीज द 3 हार्मोन्स दैट इज नोन एज द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स. पहला है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, है ना, दूसरा है आपका मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, एंड थर्ड वन इज सम अमाउंट ऑफ एंड्रोजन्स. तो जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है, द मोस्ट कॉमन इज नथिंग बट और major one is nothing but the cortisol. So cortisol is the major one amongst the glucocorticoid. Then aldosterone is a major one amongst the mineralocorticoids, and some amount of androgens. Now these hormones, they are released daily. They are released in the early morning. याद रखना है, अर्ली मॉर्निंग में ज़्यादा रिलीज होते हैं. दिस हार्मोन्स आर रिलीज इन द अर्ली मॉर्निंग. अराउंड 10 to 20 milligram ऑफ हाइड्रोकॉर्टिजोन एंड 0.125 milligram ऑफ aldosterone is synthesized and released from adrenal cortex. Now they are synthesized from cholesterol. And इसके ऊपर एक GPAT 25 में क्वेश्चन आ चुका है ना. What is the precursor for corticosteroids? So precursor for corticosteroid is a cholesterol. तो इसके ऊपर क्वेश्चन ऑलरेडी 2 बार आ चुका है, राइट. तो डेली अर्ली मॉर्निंग these glucocorticoids, mineralocorticoids, and sex steroids, they are synthesized daily. 10 to 20 milligram of hydrocortisone and 0.125 milligram of aldosterone, they are synthesized and released in the blood. ठीक है, उनका blood level is controlled. Blood level is in a particular range. They are synthesized from cholesterol. Cholesterol क्या है फिर? It is a biosynthetic precursor for steroids. ठीक है, and remember the most common glucocorticoid is a cortisol, mineralocorticoid is a aldosterone, and some androgens. What is the they are also released upon the stress. अगर आपको स्ट्रेस है, if you are under the threat, so again these hormones are produced. Okay, so stress is one of the stimulus, and again blood volume, stress, then ACTH is also stimulus. Now these all steroid will have one ring in the system. एक ring होता है, कौन सा? साइक्लोपेंटेनो और हाइड्रोक्सिनेंथ्रिन रिंग. तो इसके ऊपर भी 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है. So which type of ring is present in the steroids? So in the steroids you have cyclopentano per hydrophenanthrin ring. तो याद रखना है कि स्टेरॉइड्स में साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोक्सिनेंथ्रिन रिंग होता है. कैसा होता है ये रिंग अपन देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में. सो विल सी इन द नेक्स्ट स्लाइड हाउ द रिंग विल लुक. So steroids has a cyclopentano per hydrophenanthrin ring system. Remember,
corticosteroids, they are released by adrenal cortex. Adrenal cortex release three types of steroid. First one is your glucocorticoids, second one is a mineralocorticoids, and third one is a sex steroids. So out of that sex steroids, androgens are the mostly. That's why androgens, right? And they are controlled by ACTH produced by pituitary gland, and intense pituitary gland is controlled by hypothalamus. That's why hypothalamus pituitary adrenal axis, the term is known as a HPA axis. Now adrenal gland has a 3 layers. Adrenal cortex has a 3 layers. Adrenal gland has 2 layers, adrenal cortex and adrenal medulla. तो adrenal cortex ये हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, और adrenal medulla को क्या करता है? They will produce adrenaline, noradrenaline, है ना, dopamine. So adrenal cortex will produce corticosteroids, and adrenal medulla will produce that adrenaline. Okay. Now there are 3 layers of adrenal cortex. Now adrenal cortex के 3 layer होते हैं. So first layer is known as a zona glomerulosa. Zona glomerulosa, then zona vesiculata, and then zona reticularis. There are 3 layers of adrenal cortex. Adrenal cortex का भी 3 लेयर होता है. पहला होता है zona glomerulosa, सेकंड होता है आपका zona vesiculata, एंड थर्ड लेयर होता है आपका zona reticularis, है ना. So adrenal cortex will release the corticosteroids, and adrenal medulla will release the adrenaline. But adrenal cortex has 3 layers. First one is a zona glomerulosa, which will release the mineralocorticoids. Zona glomerulosa will release the mineralocorticoids. मतलब ये aldosterone release करेगा. And then zona fasciculata will release the glucocorticoids. Zona fasciculata will release the glucocorticoids. ये produce करता है glucocorticoids. And zona reticularis will produce androgens. ठीक है. There are 3 layers of adrenal cortex, ये याद रखना है. Now next we'll see. Next one क्या है? What are the actions of these corticosteroids? Naturally there are only 2 corticosteroids which are produced. Naturally कौन produce होता है? याद रखना है. Naturally cortisol, then hydrocortisone, and hydrocortisone is produced. Okay. Cortisol and hydrocortisone, these are the glucocorticoids naturally produced. Then aldosterone is a mineralocorticoid produced naturally. Now what are the actions of this steroid? What are the actions of corticosteroids? Now actions of corticosteroids are divided into 3 types. इनकी जो actions है वो 3 टाइप के एक्शन होते हैं. पहला होता है फिजियोलॉजिक. So actions of these corticosteroids, they can be divided into 3 type. First one is a physiologic. तो पहला होता है physiologic action due to physiological presence. उनका जो physiological काम है corticosteroids का, क्या काम है भाई उनका? कि वो स्ट्रेस में रिलीज होते हैं, और रेगुलेशन ऑफ ब्लड वॉल्यूम उनका काम है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का. ठीक है ना. बाद में रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म, है ना, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स उनका वो काम है ना. So due to their physiology, what are the actions of corticosteroid? They are known as the physiological actions. That is due to the either endogenous steroids or their synthetic analog. They are at a physiological state. मतलब physiological action, if you want to see physiological actions of steroid, so they will be produced by low dose of synthetic analog. अगर low dose देंगे तो physiological action मिलेगा. Now second type of action is a pharmacological action or pharmacologic action, also known as a supraphysiologic action. Because if you increase dose, थोड़ा सा heavy dose देगा तो that will be seen. So at a normal dose, corticosteroids will show their physiological action, so that's why physiologic action. And at a heavier dose, at a higher dose, they will show pharmacological actions like anti-inflammatory and immunosuppressive action. तो एंटी इंफ्लेमेटरी होता है, पेन इन्फ्लेमेशन कम करेगा. इम्यूनोसप्रेसिव होता है, इम्यूनिटी कम करेगा. ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ऑर्गन रिजेक्शन के लिए इम्यूनोसप्रेसिव. एंड थर्ड टाइप ऑफ एक्शन इज नोन एज अ परमिसिव एक्शन. थर्ड टाइप ऑफ एक्शन ऑफ दिस स्टेरॉइड्स आर नोन एज अ परमिसिव एक्शन. पहला है फिजियोलॉजिक एक्शन,
फिजियोलॉजिक एक्शन, दूसरा है फार्माकोलॉजिक एक्शन, थर्ड वन इज अ परमिसिव एक्शन. नाउ परमिसिव एक्शन क्या होता है? नाउ एज आई टोल्ड यू, मेजर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इज अ cortisol है ना. cortisol is a major one. So in presence of cortisol, the actions of noradrenaline, noradrenaline क्या करता है? इट इज अ वैसोप्रेसर, ब्लड प्रेशर, ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट करता है, वैसोप्रेसर है ना. तो नॉर एड्रेनलिन के जो एक्शन है, ओनली इट इज सीन इन प्रेजेंस ऑफ कॉर्टिजोल, दैट्स व्हाई these actions are known as a permissive action, because cortisol permits the noradrenaline to produce its action. Permissive action, they are popular and they are concerned with the corticosteroidal activity. The actions like vasopressor and lipolytic action of noradrenaline is seen only in presence of cortisol. तो जो आपके स्टेरॉइड्स है उसके तीन टाइप के एक्शन होते हैं. पहला होता है फिजियोलॉजिकल एक्शन एट अ लो डोज और endogenous hormone or their synthetic analog at a low dose will show physiological action. Pharmacological actions मतलब at a higher dose anti-inflammatory and immunosuppressive action will be seen. And third one होता है permissive actions, that is because of the permission given to the noradrenaline के vasopressor lipolytic action. So we have seen introduction, we have seen the adrenal gland layers, and then corticosteroids के physiological, pharmacological and permissive action. The actions of corticosteroids are divided into three type. ठीक है, actions देखेंगे अपन अभी. Now how these steroids are synthesized in the body, है ना. how these steroids are synthesized in the body. पहला है ना एसिटेट. एसिटेट मतलब क्या है? इट में कम फ्रॉम डायरेक्टली ग्लाइकोलिसिस. आपका जो ग्लाइकोलिसिस होता है वहां से एसिटेट आएगा. एसिटेट लैक्टेट कहाँ से आता है? ग्लाइकोलिसिस से. तो एसिटेट कंबाइन होके कोलेस्ट्रॉल बनता है ना. कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस अपन ने देखा है. तो एसिटेट से चालू होता है, कोलेस्ट्रॉल बनेगा. कोलेस्ट्रॉल इज कन्वर्टेड इनटू प्रेग्नेनोलोन. कोलेस्ट्रॉल इज कन्वर्टेड इनटू प्रेग्नेनोलोन. Cholesterol is converted to pregnenolone. Then pregnenolone is converted into 7-hydroxypregnenolone. तो 7-hydroxypregnenolone बाद में डी है ना, dehydroepianhydrosterone है ना. 7-hydroxypregnenolone is converted to dehydroepianhydrosterone है ना. तो जो 7-hydroxy प्रेग्नेनोलोन है वो दैट इज आल्सो कन्वर्टेड इनटू 7-hydroxyprogesterone. एंड ये जो है dehydroepianhydrosterone दैट इज कन्वर्टेड इनटू एंड्रोस्टेन डायोन के बाद में टेस्टोस्टेरोन बनता है. और 7-hydroxyprogesterone का 11-deoxycortisol बनता है. कॉर्टिसोल से बाद में टेस्टोस्टेरोन बनता है एंड 11-deoxycortisol से कॉर्टिसोल बनेगा आपका. टेस्टोस्टेरोन के बाद में एस्ट्राडायोल बनता है. अब प्रेग्नेनोलोन इज कन्वर्टेड इनटू प्रोजेस्टेरोन, then 11-deoxycorticosterone, then corticosterone and aldosterone. So that's how they are synthesized. Okay. अभी देखो कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर. इफ यू सी द स्ट्रक्चर ऑफ कोलेस्ट्रॉल, तो कोलेस्ट्रॉल है का स्ट्रक्चर क्या है? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कोलेस्ट्रॉल. तो दिस रिंग सिस्टम, दिस इज वन रिंग, सेकंड रिंग, थर्ड रिंग and fourth ring. This ring system is known as a cyclopentanoperhydrophenanthrin. Numbering will start from this. यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9. बाद में यहाँ पे 10 11 12 13
15, 16, 17, 18, ना 19, 20. तो कोलेस्ट्रॉल इज अ C27 स्टेरॉइड. एक बार क्वेश्चन भी आया था कि हाउ मेनी कार्बन्स आर प्रेजेंट इन द कोलेस्ट्रॉल. तो कोलेस्ट्रॉल इज अ C27 स्टेरॉइड, but these glucocorticoids are nothing but the only C20 steroid. तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो होता है वो उनमें 27 कार्बन नहीं है, ओनली 20 कार्बन आर देयर. तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स दे आर नोन एज अ C20 स्टेरॉइड. इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन आ चुका है. नंबरिंग अगेन विल स्टार्ट फ्रॉम दिस 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ओके, then 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 है ना, 20 21 and 20 and 21. okay, so basically cholesterol is a C27 steroid and glucocorticoids are nothing but the C20 steroids. तो यहाँ पे दो क्वेश्चन आपके यहाँ पे कवर हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट है. ठीक है, now next we'll see metabolic effect of glucocorticoids. What are the effect of glucocorticoids? What are the actions of glucocorticoids? What is the effect on metabolism? Metabolic effect of glucocorticoids. Most of the glucocorticoids जो है, so they have glucocorticoids, they are having majorly catabolic action. catabolic है ना. मेटाबॉलिज्म क्या होता है? एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म. anabolism plus catabolism. Anabolism plus catabolism is a metabolism. Anabolism मतलब क्या है? सिंथेसिस है ना. एनाबॉलिज्म मतलब क्या है? सिंथेसिस. कैटाबॉलिज्म मतलब क्या है? ब्रेकडाउन. राइट. सो adrenal cortex will secrete a hormone known as corticosteroids. Now corticosteroids are mostly catabolic in nature. जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं वो कैटाबोलिक होते हैं. कैटाबोलिक मतलब ब्रेक डाउन करेंगे, है ना. दे विल ब्रेक डाउन. सो व्हाट आर द एक्शंस ऑन अ कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन, मेटाबॉलिज्म. तो देखो मेन एक्शन क्या है. तो ऑन अ कार्बोहाइड्रेट व्हाट कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स विल कॉज? कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स विल इंक्रीज द ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. तो कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन करेंगे, ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन करेंगे, ग्लाइकोजिनोलाइसिस. So they will cause hyperglycemia. Corticosteroids will cause hyperglycemia due to increased glycogenolysis. Glycogen का breakdown करेंगे. They will also move glycogen to the muscles. Glycogen muscle में move करेंगे, and that's why glycogenolysis. And also this increases the gluconeogenesis, synthesis of glucose from non-carbohydrate precursor. Right. They decreases the peripheral utilization of glucose. तो देखो, because of these three combined action on carbohydrate, they increases the blood sugar level. ठीक है. तो जो corticosteroids है वो hyperglycemia करेंगे. They will increase the blood sugar level. Corticosteroids will cause hyperglycemia. How? They will increase the glycogenolysis. Glycogen का breakdown करेंगे मसल में लेके जाके, तो ग्लूकोज रिलीज होगा. Hyperglycemia. Also they causes the gluconeogenesis, synthesis of new glucose from the other molecules, and decreases the peripheral utilization of glucose. मतलब यूटिलाइजेशन कम करेंगे, ब्रेकडाउन भी करते हैं ग्लाइकोजन का और नया ग्लूकोज बना देते, तो अल्टीमेटली हाइपरग्लाइसेमिया. राइट. तो मेटाबॉलिक इफेक्ट में पहला है corticosteroids will cause hyperglycemia. Now second, on lipids, again they also has a breakdown effect on lipids, and they causes the redistribution of body fat. ब्रेकडाउन करने के बाद में redistribution of body fat मतलब क्या है? नॉर्मली बॉडी फैट कहाँ पे होता है? बेली के ऊपर ज़्यादा होता है फैट, है ना. एंड ब्रेकडाउन करके these fats are mobilized from adipose tissue to the some other tissue like face. Body fat they are broken down and mobilized at a face. फेस के ऊपर ज़्यादा फैट आएगा आपके, so your face look like a moon face. मून फेस इज वन ऑफ द सिम्टम ऑफ स्टेरॉइड्स, है ना. स्टेरॉइड्स जो ज़्यादा लेता है उसका मून फेस होता है. देर इज डिपोजिशन ऑफ फैट इन द माउथ, so mouth will look like a fish mouth. And there is also deposition of lipids on a back,
बैक मतलब जो बैक शोल्डर है आपका वहाँ पे, दैट्स वाई यू विल लुक लाइक अ बफेलो हम्प, विल लुक लाइक अ बफेलो हम्प. So these three, and a moon face, fish mouth, and buffalo hump, they are the symptoms caused by corticosteroids due to breakdown of lipid and redistribution of lipid, right? Then and they will remove the lipids from extremities, जो आपके extremities है जैसे थाइज वगैरह है ना, तो extremities जो हाथ वगैरह थाइज वगैरह वहाँ से लिपिड को मोबिलाइज करके स्टोरेज से मोबिलाइज करके फेस माउथ और आपके शोल्डर के ऊपर लगा देगा. दैट्स वाई मून फेस फिश माउथ बफेलो हैम्प, है ना. अगर कोई ओबेस लड़की है उसका अगर फैट मोबिलाइज हो गया तो शी विल लुक लाइक अ ब्यूटीफुल, ठीक है. वैसे भी वो भी वैसे ही ब्यूटीफुल होती है बट स्टडी में, ठीक है. नाउ अगेन ऑन अ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, सो अगेन दे विल ब्रेक डाउन द प्रोटीन को भी ब्रेक डाउन करते हैं. And breakdown of protein results in the muscle wasting. So they increases the catabolism of protein, metabolism of protein, and that's why there is a release of amino acids. Amino acids release होंगे और जो लिपिड को ब्रेक डाउन करने के बाद में ग्लिसरॉल रिलीज होता है. These amino acid and glycerol, they are the precursor for the synthesis of glucose. So they break down the protein, break down the lipid. Breakdown product of protein is amino acid. Breakdown product of lipid is a glycerol. Both are the precursor for synthesis of glucose. So that's how they increase the glucose, and due to this precursor. Also because of the breakdown of protein, जब प्रोटीन का ब्रेकडाउन होगा तो क्या होगा, अमीनो एसिड से नाइट्रोजन रिलीज होगा, राइट. सो है ना, दे कॉजेज द नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस, है ना. ड्यू टू प्रोटीन कैटाबोलिक एक्शन ऑन प्रोटीन, दे कॉजेज द नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस. Negative nitrogen balance. Then again, what is the action of these corticosteroids on a electrolyte? Negative nitrogen balance. So on a electrolyte क्या action है? So endogenous hormones means that glucocorticoids causes the sodium retention and potassium excretion. Sodium retention and potassium excretion. So hypernatremia, सोडियम ज़्यादा रिटेन होगा तो क्या होगा, हाइपर नाइट्रेमिया. पोटेशियम ज़्यादा एक्सक्रीट होगा तो क्या होगा, हाइपोकैलेमिया. तो दे कॉजेज द हाइपर नाइट्रेमिया एंड हाइपोकैलेमिया. ओके, नाउ अदर इफेक्ट्स ऑफ दिस कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ऑन द, है ना, जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट इज द एक्शन ऑन बोन्स. सो ऑन बोन्स लॉन्ग टर्म यूज ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दे कॉजेज द ऑस्टियोपोरोसिस. आपकी जो हड्डियाँ है वो कमजोर कर देगा, ऑस्टियोपोरोसिस. Long-term use of these steroidal drugs causes the osteoporosis and makes the bone susceptible for the fractures. Again, they will destroy the lymphoidal tissue. So, regression of lymphoidal tissue. Lymphoidal tissue को डिस्टर्ब करता है. Then muscle wasting with the heavy dose of steroids. ज़्यादा steroid लेंगे muscle कम होता है, ठीक है. Now these are the metabolic effect of steroids. Metabolic effect of steroid. Now actions of steroid can be studied under different headings. First one is the metabolic effects. ये अपन ने देखा है metabolic effects. Now second heading, है ना, second action is a anti-inflammatory action. Okay, second action is a anti-inflammatory action. But what happens in the inflammation, you should know. Inflammation क्या होता है? So during the inflammation process क्या क्या होता है ना. So whenever you will get a injury, आपके सेल टिश्यू ऑर्गन में इंजुरी होता है ड्यू टू आइदर मैकेनिकल और एनी रीजन, है ना, मैकेनिकल इन्फेक्शन और एनीथिंग. तो सेल इंजुरी that damage the phospholipid bilayer, that is a membrane. There is damage to the membrane also, cell membrane. There is a cell membrane is made from a phospholipid, आपको मालूम है phospholipid. So if there is a cell injury, there is damage to the cell membrane, right? And there is a release of phospholipids because of the one enzyme known as phospholipase A2. The enzyme phospholipase A2 will break down the phospholipid. Phospholipase A2 will break down the phospholipid and convert the phospholipid into arachidonic acid. Arachidonic acid क्या है? Is a 20 carbon fatty acid. Arachidonic acid क्या है? 20 carbon वाला fatty acid है.
Arachidonic acid is converted into prostaglandins, thromboxane. At the one hand, arachidonic acid is converted into prostaglandins, prostacyclins, and thromboxane. At the one hand, by using cyclooxygenase pathway known as a COX pathway. Arachidonic acid converted into prostaglandins and thromboxane, prostacyclins via COX pathway. And this arachidonic acid at another hand converted into leukotrienes known as a LOX pathway. Leukotrienes. Now this prostaglandins जो है जैसे prostacyclin से prostaglandin synthesis will convert arachidonic acid into prostaglandins except PGI2, and then prostacyclins and then thromboxane. Now these three are responsible for the pain, inflammation, and fever. That's why COX inhibitors are used in the pain, inflammation, and fever. है ना, जैसे NSAID होता है, COX inhibitors होते हैं. Now LOX pathway, you will get a leukotrienes. So leukotrienes है ना, LOX inhibitor जो होता है, जैसे जिलोटॉन नाम का एक ड्रग है, LOX inhibitor. LOX मतलब क्या, लिपोऑक्सीनेस. COX मतलब क्या, साइक्लोऑक्सीनेस. ठीक है, so it is used है ना. These leukotrienes will cause bronchoconstriction. So drug which inhibit the LOX pathway, they are used in the asthma, bronchial asthma. So जो COX inhibitor है, they are anti-inflammatory, है ना, analgesic, anti-inflammatory, antipyretic. So COX inhibitors, they are analgesic, anti-inflammatory, and है ना, and antipyretics, the NSAID. And LOX inhibitors जो है, they are useful as a drug for asthma. ये अस्थमा में यूज होंगे इनिबिटर्स ऑफ दिस पाथवे. कौन है इनिबिटर? तो लॉक्स इनिबिटर कौन है? जिलोटॉन, जिलोटॉन. ल्यूकोट्राइन्स इनिबिटर कौन है? कास्ट, मोन्टेलोकास्ट, जैप्रिलोकास्ट, है ना, वो. और NSAID आपको मालूम है, राइट. बट एज आई टोल्ड यू, दिस corticosteroids also has an inflammatory, anti-inflammatory effect. जो corticosteroids हो है वो भी anti-inflammatory है. क्यों? Because these corticosteroids inhibit this enzyme. Corticosteroids target phospholipase A2, तो ये inhibit करते हैं. Corticosteroids will inhibit the phospholipase A2 and prevent the conversion of arachidonic acid into prostaglandins, leukotrienes, thromboxane and all, right. तो यहाँ पे ही इनहिबिट किया तो ये बाकी का कार्यक्रम होगा ही नहीं ना. दैट्स वाई कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, दे आर यूज्ड इन बोथ, इन केस ऑफ, है ना, इन्फ्लेमेशन, पेन, है ना, एज वेल एज इन केस ऑफ अस्थमा. तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, दे आर यूजफुल इन द एज अ पेन किलर, एंटी इन्फ्लेमेटरी आल्सो, एंड आल्सो एंटी अस्थमेटिक. ओके, दैट्स वाई. नाउ यू कैन सी एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट ऑफ दिस कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, है ना. इनिबिशन ऑफ कीमोटैक्सिस, दे कॉजेस द इनिबिशन ऑफ कीमोटैक्सिस, है ना. कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स इनिबिट द कीमोटैक्सिस. कीमोटैक्सिस मतलब क्या है? कीमोटैक्सिस मीन्स इट इज अ पेट्रोलिंग और मूवमेंट ऑफ योर, है ना, एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट. देखो, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स इनिबिट द कीमोटैक्सिस मीन्स दे प्रिवेंट और दे inhibit the movement of WBCs towards the infection or inflammation. That's why they are the powerful anti-inflammatory drugs, and they inhibit the phospholipase A2 enzyme, which in turn prevent the formation of prostaglandin, leukotrienes, thromboxane, prostacyclins. They also reduces the capillary permeability. जो blood vessel के capillaries होते हैं उनका permeability कम करेंगे, है ना. And that's why वहाँ से जो फ्लूइड है वो लीक नहीं होगा, एंड दैट्स हाउ दे प्रिवेंट द और दे रिड्यूसेस द ट्रांसोडेट एज वेल एज एक्सुडेट. मतलब जब इंजरी होता है तो आपका जख्म में जो वाइट पानी जमा होता है ना, दे आर प्रिवेंटेड. ओके, सो एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट, दे इनहिबिट द कीमोटैक्सिस एंड प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ इंफ्लेमेटरी मेडिएटर्स बाय इनहिबिटिंग द फॉस्फोलाइपेज A2, right. Also, due to their permissive effect on noradrenaline, they causes the vasoconstriction and prevent the development of septicemic shock.
है ना, कॉर्टिसोल के अंडर नॉरएड्रेनालिन विल कॉज वैसोकंस्ट्रिक्शन एंड दैट्स हाउ प्रिवेंशन ऑफ सेप्टिसेमिक शॉक. बट बिकॉज ऑफ दिस एक्शन, है ना, बिकॉज ऑफ दिस एंटी इंफ्लेमेटरी एंड बिकॉज ऑफ दिस एक्शन दे आल्सो डिलेज द वुंड हीलिंग. दे आल्सो डिलेज द वुंड हीलिंग. मतलब क्या है, एंटी इंफ्लेमेटरी एक्टिविटी ऑफ दिस कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दे आर अप कैन बी स्टडीड अंडर 2 हेडिंग्स. इनका जो एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है वो 2 कारणों की वजह से होता है. तो इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जो होता है एक अर्ली रिस्पॉन्स होता है. इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स इज, है ना, अर्ली रिस्पॉन्स एंड लेट रिस्पॉन्स. तो अर्ली रिस्पॉन्स मतलब क्या है कि अर्ली रिस्पॉन्स इज नथिंग बट द माइग्रेशन ऑफ WBC टूवर्ड द इन्फेक्शन. मैक्रोफेजेस WBC, है ना, न्यूट्रोफिल्स, यूसिनोफिल्स, है ना, basophils, they will go at an infection site, that is known as a chemotaxis. So they inhibit the chemotaxis. And late response क्या है कि जहाँ पे कोलेजन डिपोजिट होगा वहाँ पे फाइब्रोसिस होगा इन्फेक्शन साइट के ऊपर, फाइब्रोसिस, एंड देन लेटर ऑन स्कार बनेगा, स्कार. सो लेट फेज इज इनहिबिटेड, है ना. तो स्कार एंड फाइब्रोसिस जल्दी नहीं होगा, मतलब it will prevent or it will delay the wound healing and scar formation. So anti-inflammatory. Now effects on cardiovascular system, nervous system and GIT. So cardiovascular system के ऊपर क्या है, they have a positive inotropic effect, है ना. positive inotropic मतलब हार्ट रेट बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, है ना. positive inotropic, positive chronotropic effect on heart. They decreases the permeability of capillaries. They are also mild euphoric. तो नर्वस सिस्टम के ऊपर क्या करेगा, यूफोरिया करेगा. False feeling of well-being is known as a euphoria, and can decrease the seizure threshold. मतलब सीजर थ्रेशोल्ड कम करेगा, मतलब ब्रेन को जल्दी एक्साइट करने में हेल्प करेगा. सो if any drug decreases the seizure threshold, that means it is a vulnerable for epilepsy. मतलब ये epilepsy कर सकता है. Can also aggravate the peptic ulcer by increasing the HCl and pepsin in the stomach. मतलब ये क्या करेगा, also increases the peptic ulcer by increasing the production of HCl and pepsin in the stomach, and also because of the inhibition of prostaglandin. तो ये जो अल्सरेशन करते हैं स्टमक में, स्टेरॉइड्स मतलब क्या है, ये कॉर्टिजोल, हाइड्रोकॉर्टिजोन, बीटामिथाजोन, डेक्सामेथाजोन, ट्राइमसिनोलोन, प्रेग्निसोलोन, ये ड्रग के नाम है. सो ऑल दीज आर द कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, है ना. सो दे इंक्रीजेस द अल्सर बिकॉज ऑफ द 2 reasons. फर्स्ट, दे इंक्रीजेस द HCl and pepsin production. Second reason, inhibit the protective function of prostaglandins. And they also irritate the GIT. That's why they can also produce a ulcer. And ulcer produce करते हैं, that's why they are contraindicated in case of ulcer. इतना simple होता है. They are contraindicated in case of peptic ulcer. बाद में देखने वाले contraindication. Epilepsy में contraindicated है क्योंकि they will decrease the seizure threshold. Right? Now effect on hematopoietic system, blood system के ऊपर क्या करते हैं? They, in case of cancer, this drug destroy the T cell, है ना, T lymphocyte जो होता है, and B cell, both are destroyed, but B cell are less sensitive. Destruction of lymphoidal tissue, sequestration of lymphocytes, eosinophils, monocytes, मतलब basophils, ये सभी ब्लड सेल का प्रोडक्शन कम करेंगे. They will decrease the lymphocyte, then eosinophil, monocyte, basophils. Only neutrophils are unaffected. But ठीक है, मतलब they will decrease eosinophil, monocyte, lymphocyte, basophils, है ना. तो क्या होगा, eosinophilia, है ना, ये होगा. But circulating neutrophils are increased because of the release from bone marrow, है ना. Now effect on immunity. तो आपको मालूम है कि दे आर इम्यूनोसप्रेसेंट. क्या है वो,
ये इम्यूनोसप्रेसेंट होते हैं, बिकॉज स्टेरॉइड्स आर द इम्यूनोसप्रेसेंट. दे सप्रेसेस द सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी. सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी क्या होता है? इम्यूनिटी which is because of the T lymphocytes and macrophages. T lymphocytes and macrophages के कारण जो इम्यूनिटी है उसको अपन सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी बोलते हैं, है ना. दूसरा एक होता है ह्यूमरल इम्यूनिटी. ह्यूमरल इम्यूनिटी क्या होता है? दैट इज मेडिएटेड बाय बी लिम्फोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेस. तो जो टी लिम्फोसाइट्स की वजह से जो इम्यूनिटी होता है दैट इज नोन एज सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, और जो बी लिम्फोसाइट की वजह से जो इम्यूनिटी मिलता है आपको दैट इज नोन एज अ humoral immunity, right? So these drug suppresses both CMI, that is cell mediated immunity, and humoral immunity, okay, and they inhibit the release of leukotrienes. So they inhibit the release of interleukins, interleukin 1 and interleukin 2, and high dose of this drug can result in the catabolism of immunoglobulin G. immunoglobulin G antibody जो है उसको भी break down करेगा high dose. And due to their immunosuppressive effect they are used in the organ transplantation, है ना. अगर आपका लीवर खराब है, लीवर बदलना है आपको, तो आपको डोनर चाहिए, और कोई डोनर आपको डोनेट किया लेकिन वो डोनर अलग है, उसका डीएनए अलग है, उसका प्रोटीन्स अलग है, और आप अलग हो, आपका डीएनए अलग है, तो उसका लीवर आपको चलेगा नहीं चलेगा? मोस्ट ऑफ द टाइम चलता ही नहीं, है ना, क्योंकि दैट इज अ फॉरेन प्रोटीन. If your body, है ना, your body will not accept foreign protein, so your body will treat that protein as antigen. Against that antibody will produce the antigen antibody reaction will be there. There is a rejection of that organ. Now to suppress this immunity, these steroids are used. They suppresses the immunity, and that's why organ rejection will not be there, right? That's why due to their immunosuppressant effect they are useful as a organ, they are useful to suppress the immunity in organ transplantation. And also they are also used for hypersensitivity reaction, जिसको hypersensitivity reactions है उसमें भी यूज कर सकते, right? You can see over here, तो bone marrow, and bone marrow में ये these corticosteroids they will suppress the formation of a monocyte, lymphocyte, बेसोफिल, इओसिनोफिल, ओके. एंड जो आपके लिम्फोसाइट एंड होते, देयर आर टू टाइप ऑफ लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स. जो बोन मैरो से लिम्फोसाइट्स आते हैं उसको बोलते हैं बी लिम्फोसाइट्स. लिम्फोसाइट डिराइव्ड फ्रॉम बोन मैरो, बी लिम्फोसाइट्स. लिम्फोसाइट्स विच आर मैच्योर्ड इन द थाइमस, थाइमस में जो मैच्योर होते उसको बोलते हैं T lymphocytes. T lymphocytes are of two type. जो T lymphocytes होते हैं वो दो टाइप के होते हैं. फर्स्ट वन इज नोन एज अ, है ना, हेल्पर T lymphocytes और हेल्पर T सेल, हेल्पर T सेल. सेकंड वन इज नोन सप्रेसिव T सेल. हेल्पर T cell is also known as CD4 cell. And suppressive T cell is known as CD8 cell. CD4 cell is decreased in case of AIDS. HIV में ये CD4 cell कम हो जाता है, याद है, right? So these steroids क्या करते हैं? They will destroy this helper T cells. T cell को कम करेंगे उसका काम. They will suppress, है ना, the immunity. And in the plasma also B cell जो है ना, means they will decrease the cell mediated immunity in a CMI. ठीक है, CMI. They will suppress the CMI and also suppress the humoral immunity. Also suppress the humoral immunity. B cell, you know. Now other effects of corticosteroids. देखो बाकी क्या इफेक्ट है corticosteroids के. They are essential for normal muscular activity. जो normal muscle का activity है उसके लिए important होते हैं. They are also required for normal CNS function. brain की function के लिए भी important होते हैं. Now deficiency of these corticosteroids, that's why they are present in the body. बॉडी में क्यों है कॉर्टिसोल, क्यों है बॉडी में हाइड्रोकॉर्टिसोन, क्यों है बॉडी में एड्रिनल ग्लैंड से क्यों रिलीज होता है? इसेंशियल है बॉडी के लिए, तभी तो रिलीज होता है ना. इसेंशियल फॉर नॉर्मल मस्कुलर एक्टिविटीज, नॉर्मल सीनस फंक्शन. डिफिशियंसी ऑफ दिस एड्रिनल हार्मोन्स कॉर्टिसोल, हाइड्रोकॉर्टिसोन causes the एपेथी एंड डिप्रेशन
कॉजेज द एपैथी एंड डिप्रेशन, है ना. एक्सेस अगर हो गए तो कॉजेज द एंजाइटी, रेस्टलेसनेस एंड साइकोसिस. दे आल्सो हैज अ रोल इन अ कैल्शियम बैलेंस. ठीक है. कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आल्सो रेगुलेट द कैल्शियम बैलेंस. ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स इनहिबिट द एब्सॉर्प्शन ऑफ, है ना, इनहिबिट द एब्सॉर्प्शन एंड इंक्रीजेस द एक्सक्रीशन वाया किडनी. कैल्शियम का एब्सॉर्प्शन कम करते हैं, एक्सक्रीशन ज़्यादा करते हैं, तो हाइपोकैल्सीमिया हो जाएगा, हाइपोकैल्सीमिया बिकॉज ऑफ द कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स. एंड देयरफॉर बोन रिसॉर्प्शन. हाइपोकैल्सीमिया हो जाएगा, बॉडी कहाँ से कैल्शियम लेंगी, बोन से लेंगी, सो देयरफॉर बोन रिसॉर्प्शन. दैट्स व्हाई corticosteroids causes the osteoporosis. Again, corticosteroids are essential for maintaining the normal glomerular filtration rate, and these corticosteroids and glucocorticoids mainly also has some mineralocorticoids action, मतलब sodium water retention. Now these glucocorticoids or corticosteroids are classified into two type majorly. देखो corticosteroids they are of two type mostly. 3 टाइप के होते हैं वैसे, बट एंड्रोजेंस यहाँ पे कम ही बनते हैं ना. तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, फर्स्ट वन इज अ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, सेकंड वन इज अ मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स एंड थर्ड वन इज अ सेक्स स्टेरॉइड्स. तो थर्ड वन बाद में देखेंगे सेपरेटली, है ना. एड्रेनल कॉर्टेक्स में स्टेरॉइड्स बहुत ही कम बनता है, सेक्स स्टेरॉइड्स मोस्टली वो टेस्टिस और ओवरी में बनते हैं बाकी. सो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आर डिवाइड इनटू 3 क्लासेस, शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग एंड लॉन्गर एक्टिंग. शॉर्ट एक्टिंग वाला होता है हाइड्रोकोर्टिजोन एंड कॉर्टिजोल, वो एंडोजिनस होता है, मतलब आपकी बॉडी बनाती है इसको. सो शॉर्ट एक्टिंग इज नथिंग बट द एंडोजिनस ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, दैट इज अ कॉर्टिजोल एंड कॉर्टिकोस्टेरॉन, हाइड्रोकोर्टिजोन एंड कॉर्टिसोल, दे आर द एंडोजिनस, क्योंकि ये बॉडी में बनता है ना. 8 to 15 आवर्स होता है इनका शॉर्ट ड्यूरेशन. इंटरमीडिएट एक्टिंग, थोड़ा सा इंटरमीडिएट एक्टिंग, उसमें है आपका प्रेडनिसोलोन. कौन है आपका? प्रेडनिसोलोन, मिथाइल प्रेडनिसोलोन, ट्राइमसिनोलोन, डेफ्लाजोकॉर्ड, है ना. लॉन्गर एक्टिंग होता है बीटामेथाजोन, डेक्सामेथाजोन, और इसके ऊपर ऑलरेडी 2-3 बार क्वेश्चन आ चुके हैं. लॉन्गर एक्टिंग कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, बीटामेथाजोन and dexamethasone, they are the longer acting. Prednisolone, methylprednisolone, triamcinolone, deflazacort, they are intermediate acting. इनका ड्यूरेशन भी देख लेंगे, नेक्स्ट आएगा आपको. जैसे ये 8 to 15 आवर, 15 to 36 आवर, मोर देन दैट, है ना. तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग, लॉन्गर एक्टिंग, एंड दे आर आल्सो फर्दर क्लासिफाइड. सम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आर टॉपिकल स्टेरॉइड्स, तो वो देखेंगे बाद में. बट कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड कौन है? मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स आर नथिंग बट डीऑक्सीकॉर्टिकोस्टेरोन एस्टेट, नोन एज डोका, डीऑक्सीकॉर्टिकोस्टेरोन एस्टेट. देन फ्लुड्रोकॉर्टिजोन एंड अल्डोस्टेरोन. अल्डोस्टेरोन क्या है? इट इज एंडोजिनस, अल्डोस्टेरोन इज एंडोजिनस. फ्लुड्रोकॉर्टिजोन इज अ सिंथेटिक. टॉपिकली these glucocorticoids topically they are topical अलग होते हैं, जैसे potent topical glucocorticoids और potent topical steroids. potent मतलब डोज कम बोल होता है, जैसे beclomethasone dipropionate, then betamethasone benzoate, then betamethasone valerate, alcinonide, clobesterol propionate, then fluocinolone acetonide, है ना. flucortilone, triamcinolone acetonide, dexamethasone sodium phosphate. They are the potent, moderately potent में आता है. fluocinolone acetonide, ना, flucortinolone, clobesterol butyrate, mometasone. ये mometasone है, it is steroid used in the acne. जो एक्ने वल्गरिस होता है उसमें ये मोमेटाजोन यूज करते हैं. इसका एक ब्रांड नेम है मोमेट क्रीम नाम का एक आता है मोमेटाजोन का, दैट इज यूज्ड इन द एक्ने वल्गरिस.
स्किन के ऊपर लेडीज की पिंपल्स आते हैं उसकी. फ्लूटिकाजोन प्रोपियोनेट एंड हाइड्रोकोर्टिजोन एस्टेट, दे आर द मॉडरेटली पोटेंट. माइल्ड पोटेंट कौन है? हाइड्रोकोर्टिजोन ब्यूटारेट, एस्टाइट एंड ब्यूटारेट. Now mechanism of action, how they will act. Mechanism of action of glucocorticoids or corticosteroids. So they act via receptor, obviously they act via receptor. तो उनके receptor हैं. They are hormones, so they act via hormonal receptor, right? So hormonal receptor मतलब intracellular receptor. So they binds and activate the cytoplasmic receptor. They binds and activate the cytoplasmic receptor. Cytoplasmic receptor मतलब साइटोप्लाज्म कहाँ पे होता है? सेल के अंदर ही होता है. सो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, आल्सो नोन एज अ हार्मोनल रिसेप्टर, आल्सो नोन एज अ न्यूक्लियर रिसेप्टर, आल्सो नोन एज अ रिसेप्टर दैट रेगुलेट द जीन ट्रांसक्रिप्शन, है ना. सो दे बाइंड्स एंड एक्टिवेट द साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर एक्ट बाय इंक्रीजिंग द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन. दे एक्ट बाय इंक्रीजिंग द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इन हार्मोन बाय ट्रांसक्रिप्शन. क्या होता है देखो यहाँ पे, दिस स्टेरॉइड मॉलिक्यूल दे विल बाइंड टू द receptor, intracellular receptor. That complex is transported into the nucleus. They will act on a specific site on DNA, cause the transcription, that is a formation of RNA, and will cause the translation, means synthesis of specific protein. And protein मतलब वही hormones या फिर structural protein. Then ADME, absorption, distribution, metabolism, elimination of these corticosteroids. So after the absorption, after the absorption, they are absorbed orally as well as they are given orally as well as injectably. But orally they are absorbed. This is hydrocortisone. It is absorbed and undergo first pass effect. Extensively undergo first pass effect. Hydrocortisone. After absorption, 90% of hydrocortisone bound to the plasma protein, known as a corticosteroid binding globulin. Corticosteroid binding globulin, CBG. Also known as a ट्रांसकॉर्टिन. तो जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है वो एब्सॉर्प्शन के बाद में एक प्रोटीन को बाइंड करते हैं, उसका क्या नाम है? कॉर्टिकोस्टेरॉइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन और ट्रांसकॉर्टिन, मतलब ये ग्लोबुलिन होता है. इट इज मेटाबोलाइज्ड बाय लिवर बाय ऑक्सीडेशन and followed by conjugation reaction and excreted in the urine. Metabolites are excreted in the urine. Now these corticosteroids are either short acting, जैसे 8 to 12 hours इसका रहेगा एक्शन. शॉर्ट एक्टिंग में 8 to 12 hours, जैसे एग्जांपल हाइड्रोकोर्टिजोन, उसका एक ब्रांड नेम होता है इपकोर्लिन. हाइड्रोकोर्टिजोन का ब्रांड नेम है इपकोर्लिन. हाइड्रोकोर्टिजोन, कोर्टिजोन, दे आर द शॉर्ट एक्टिंग. नाउ इंटरमीडिएट एक्टिंग, दे विल एक्ट फॉर 18 to 36 hours. से एग्जांपल क्या है? प्रेग्निसोलोन, मिथाइल प्रेग्निसोलोन, ट्राइमसिनोलोन एंड फ्लोरोकोर्टिजोन. तो प्रेग्निसोलोन इट इज अ एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ प्रेडनिसोन. प्रेडनिसोन एक ड्रग है, उसका एक्टिव मेटाबोलाइट है प्रेग्निसोलोन. उसके ऊपर 4 बार क्वेश्चन आ चुका है. प्रेग्निसोलोन का ब्रांड नेम होता है वाइसोलोन, एक कॉमन ब्रांड नेम है, वैसा बहुत सारा है. देन मिथाइल प्रेग्निसोलोन. ट्राइमसिनोलोन का ब्रांड नेम होता है केनाकॉर्ड. देन फ्लोरोकोर्टिजोन, लॉन्गर एक्टिंग कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, दे विल एक्ट फॉर 36 to 54 आवर. एग्जांपल है पैरामेथाजोन, डेक्सामेथाजोन, बेटामेथाजोन. डेक्सामेथाजोन जो है उसका ब्रांड नेम कॉमनली आपको मिल जाएगा डेक्सोना बोल के. बेटामेथाजोन का ब्रांड नेम बेटनेसोल होता है. नाउ टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और टॉपिकल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, दे आर हाइड्रोकोर्टिजोन, डेक्सामेथाजोन, बेटामेथाजोन. Some are used as a inhalation glucocorticoids in the asthma, so beclomethasone, budesonide, fluticasone. They are used in the asthma. Used in the asthma. Right now, adverse reactions of these glucocorticoids. Adverse reactions of these glucocorticoids. So whenever there is a possible, they should be avoided and they should be used topically. जहाँ पे भी possible है वहाँ पे आप topical यूज कर सकते हो. systemic use should be avoided. Wherever possible they should be used topically to avoid the adverse effect. जितना आप topically यूज कर सकते हो उसको
टू अवॉइड द एडवर्स इफेक्ट, पर जहाँ पे जरूरत है वहाँ पे लेना पड़ेगा, है ना. So depending on the dose of that steroid, depending on the dose of that corticosteroids, the potency, whether it is having glucocorticoid action only or mineralocorticoid, then duration of action, the adverse effect depends on the dose, potency and duration of action. And usually a single dose जब देते हैं तो which is a harmless, single dose is a harmless. Short course अगर लेंगे that is a good tolerated, but prolonged use of these corticosteroids are related with the toxicity. What are the adverse effects? So first one is the Cushing syndrome, second one is hyperglycemia, third one is the susceptibility to infection, fourth adverse effect is osteoporosis, fifth one is the vascular necrosis, sixth one is the peptic ulceration, seventh mental disturbances, cataract होता है eyes के ऊपर, delays the wound healing and suppression of hypothalamus pituitary axis. There are a lot of adverse effect of these glucocorticoids. तो पहला है Cushing syndrome, ड्यू टू, है ना, Cushing syndrome क्यों? ड्यू टू मेटाबॉलिक इफेक्ट ऑन लिपिड्स. तो यहाँ पे लिपिड डिपॉजिट होगा, फैट्स विल बी डिपॉजिटेड ऑन द फेस, मून फेस, देन बुफेलो हम्प, ट्रंकल ओबेसिटी, मसल वेस्टिंग, थिन लिम्स, स्किन पर्पल स्टेयर एंड एक्ने. Hyperglycemia due to carbohydrate metabolism and can precipitate the diabetes mellitus. As I told you कि corticosteroids are immunosuppressive, that's why अगर आपकी immunity suppress हो गई तो you will become susceptible for the opportunistic infection. ठीक है, तो increase in the susceptibility and severity of infection. तो आपका जो dormant TB है, मतलब जो inactive TB है, वो active बन जाएगा. Then osteoporosis due to calcium mobilization, due to calcium excretion. Osteoporosis most commonly in the elderly patients, especially at vertebrae. Vascular necrosis of the bones, मतलब क्या, blood vessel का necrosis करेगा, blood flow bone में कम करेगा. That's why that can cause joint pain, stiffness, restricted movement and suppression of growth in the child. ना, तो that's why corticosteroids चिल्ड्रंस में यूज नहीं करते. पेप्टिक अल्सरेशन करेगा ड्यू टू इरिटेशन, है ना. फर्स्ट ऑफ ऑल ड्यू टू इरिटेशन, इंक्रीज इन द पेप्सिन एंड एचसीएल एंड डिक्रीज इन द पीजी, है ना. सो इट कैन प्रोड्यूस अल्सरेशन इफ कॉन्करेंटली यूज्ड विद एनएसआईडी. मेंटल डिस्टर्बेंसेस, अगर ज़्यादा डोज लेंगे तो एंजाइटी, नर्वसनेस, मूड चेंजेस, यूफोरिया, साइकोसिस एंड डिप्रेशन. कैटरैक्ट करता है, ग्लाइकोमा करता है इन द आइज अपन लॉन्ग टर्म यूज. वुंड हीलिंग को डिले करता है ना. हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सिस, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एंड एड्रेनल एक्सिस सप्रेशन ड्यू टू सडन स्टॉपेज ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड. अगर कोई पेशेंट लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट पे है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के, इफ पेशेंट इज ऑन लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड सडनली स्टॉप ऑनगोइंग लॉन्ग टर्म थेरेपी, व्हाट विल हैपन? जब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स दे रहे, आपको बाहर से स्टेरॉइड दे रहे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, तो आपकी बॉडी में रिलीज नहीं होगा ना, ऑब्वियसली. दैट विल सप्रेस द हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी. एंड इफ यू विड्रॉ दैट, इफ यू स्टॉप द सडनली दैट, what will happen? Due to therapy, there is a suppression of pituitary and hypothalamus, so there is a atrophy of adrenal cortex. And if you suddenly stop the steroid, what will happen? There is a crisis of cortisol in the body suddenly. Adrenal cortex atrophy due to the feedback inhibition. That is known as a बोलता हूँ acute adrenal insufficiency. That is known as acute adrenal insufficiency. एक्सप्लेन करता हूँ. So what are the adverse effects of glucocorticoids? Important है adverse effect of glucocorticoids. ठीक है. Now first, on a brain, glucocorticoid on a brain will cause increase in the intracranial pressure and behavioral disturbances, anxiety, restlessness, euphoria, and psychosis. These are the adverse effect on a brain. What is the adverse effect on a eyes? On eyes, they can cause glaucoma and cataract. है ना. On a heart, they will stimulate the heart cardiac output. They can cause hypertension. है ना. किडनी के ऊपर mineralocorticoid इफेक्ट करता है क्या? Retention of sodium and water, which also causes the hypertension.
Again, glucocorticoids causes the depression of immunity. That's why you are susceptible for the infection. On a stomach, they causes the dyspepsia, मतलब hypersecretion of acid and pepsin causes the ulceration. They increases the blood sugar level, diabetes mellitus. On a bone, avascular necrosis, osteoporosis, and also suppresses the आपका hypothalamus pituitary adrenal axis, hypothalamus pituitary adrenal axis suppression. These are the adverse effects. And most important is again Cushing syndrome. Cushing syndrome is the most common adverse effect of this. Cushing syndrome is also adverse effect. Okay. Cushing syndrome में क्या होता है? So we will develop a moon like face, supraclavicle hem, thinning of extremities, and extremities thin होंगे आपके. Okay, but there is a central obesity, muscle wasting. These are the adverse effect of glucocorticoids. So remaining part we'll see the tomorrow. कोई आ ही नहीं रहा है. Remaining part बाकी थोड़ा सा चल कंप्लीट ही कर लेते, काय को रुकना है. So next part is nothing but the what are the uses of glucocorticoids. What are the uses of glucocorticoids? तो ये जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है और एड्रेनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है, उनके यूजेस क्या है? दे आर यूज्ड एज अ रिप्लेसमेंट थेरेपी. इफ देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ दीज steroids, so they act as a replacement therapy in case of acute adrenal insufficiency, chronic adrenal insufficiency, and congenital adrenal hyperplasia, है ना? They can be used as a pharmacotherapy for rheumatoid arthritis, osteoarthritis and other, and they are also having diagnostic application. ठीक है, तो we'll see one by one. पहला है use replacement therapy for acute adrenal insufficiency. Acute adrenal insufficiency. Acute adrenal insufficiency क्यों होता है? Acute adrenal insufficiency, ठीक है. Acute मतलब क्या है? Acute मतलब emergency, याद रखना है आपको, immediately, है ना. Adrenal मतलब adrenal gland. Insufficiency मतलब क्या है कि there is a deficiency of adrenal steroids. Acute adrenal insufficiency मतलब acute deficiency of your cortisol and hydrocortisone, है ना. तो कब होगा acute deficiency? Obviously if there is any kind of infection, or if there is a patient is on a long term treatment of steroids, and if you withdraw that steroid, no, so it is a acute adrenal insufficiency emergency condition, है ना. In that case symptoms will appear like this: nausea, vomiting, dehydration, hypotension, weakness, hyponatremia, hyperkalemia. Intravenous hydrocortisone is given like 100 mg in hydrocortisone. तो ये acute adrenal insufficiency क्यों होता है? It may be because of the infection, or it may be because of the sudden withdrawal of steroids from a patient which is undergoing long-term therapy of steroids. ठीक है. सेकंड है chronic adrenal insufficiency, that is known as Addison's disease. तो ये Addison's disease मतलब क्या है? Due to cancer of adrenal gland, there is a deficiency of cortisol and hydrocortisone. So in that case also hydrocortisone is given orally 20 to 40 mg. Congenital adrenal hyperplasia मतलब क्या है? बचपन से ही आपको, है ना, बचपन से ही आपको क्या है कि adrenal gland का issue है. So impaired synthesis of glucocorticoids because of the enzymes defect in the enzymes required for synthesis of this. As a result of it, है ना. Congenital adrenal hyperplasia मतलब क्या कि adrenal gland बचपन से ही आपका जो adrenocorticosteroids है, corticosteroids वो नहीं बना रहा है, उसके जो enzymes है वो डिफेक्टिव है. तो obviously तो इसके कारण क्या होता है? There is a continuous release of ACTH from the pituitary, which causes the increase in the size of adrenal gland known as hyperplasia.
Now corticosteroids are also used for the therapy treatment, pharmacotherapy. They are used in the treatment of rheumatoid arthritis. rheumatoid arthritis में क्यों यूज करना है उनको? बिकॉज है ना, दे आर इम्यूनोसप्रेसिव. जो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है ना बोन्स में इन केस ऑफ rheumatoid arthritis, तो वहाँ पे यूज करते. सो अलॉन्ग विद द NSAIDs, these steroidal drugs, that is a glucocorticoids, they are used along with the NSAIDs in the treatment of rheumatoid arthritis, also used in the osteoarthritis along with the NSAID. They are also used in the allergic condition. तो जहाँ पे allergic condition है उसमें यूज करते हैं. यूजफुल इन द ब्रोंकियल अस्थमा. ब्रोंकियल अस्थमा मतलब तीनों, ये acute bronchial asthma, chronic bronchial asthma, as well as status asthmaticus. Steroids are useful in all these three conditions: acute bronchial asthma, chronic, and status asthmaticus. ठीक है. Also used in the collagen disease. collagen disease इसके बहुत सारे ऐसे सिस्टेमिक लूपस एरिथेमाटस है ना, और उसमें 2-4 डिसीज आती है और भी कोलेजन डिसीज. उसके बाद में आइज डिसीज, दे आर यूजफुल इन द इंफ्लेमेटरी कंडीशन ऑफ आइज. ऑल्सो यूजफुल इन द इंफ्लेमेटरी कंडीशन ऑफ रेनल किडनी. स्किन डिसीज, हेपेटाइटिस में भी यूजफुल है. सेरेब्रल एडिमा में यूजफुल है. लंग्स है ना, लंग्स डिसीज. कैंसर में क्यों? ड्यू टू देयर लिम्फोलाइटिक इफेक्ट. एंड ऑल्सो used for the organ transplant rejection due to immunosuppressive effect. They are also used in the diagnosis. देखो diagnosis में क्या है, ये dexamethasone suppression test is used to check intactness of hypothalamus pituitary adrenal axis. तो आपका HPA axis correct है या नहीं, intact है या नहीं, to check that dexamethasone suppression test is. And also they are used to diagnose the Cushing's syndrome. ठीक है. These are the uses. Now contraindications क्या है इनके? They are contraindicated in case of है ना, जैसे पेप्टिक अल्सर है, हाइपरटेंशन है, इन्फेक्शंस, डायबिटीज मेलिटस, वायरल इन्फेक्शंस ऑफ आइज, ओस्टियोपोरोसिस, साइकोसिस, एपिलेप्सी, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, ग्लूकोमा एंड रेनल फेलियर, इसमें कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं इसके. मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स में कौन आता है? अल्डोस्टेरोन. अल्डोस्टेरोन इज अ मिनरलोकॉर्टिकॉइड secreted from zona glomerulosa of your adrenal gland, adrenal cortex. ठीक है. Zona glomerulosa part of adrenal cortex, which causes the sodium and water retention from the distal convoluted tubule, causes the loss of potassium. इसका adverse reaction क्या है? weight gain and edema, hypertension, hyperkalemia. तो अल्डोस्टेरोन है ना, एगोनिस्ट जो है वो एक ही है जैसे फ्लूड्रोकॉर्टिजोन. फ्लूड्रोकॉर्टिजोन इज हैविंग mineralocorticoid activity. It is having mineralocorticoid activity. So used as a replacement therapy for aldosterone in a Addison's disease. aldosterone के एंटागोनिस्ट कौन है? इसके एंटागोनिस्ट आपको मालूम है, स्पाइरोलैक्टोन which is diuretic. Then इप्रेलेनोन के एंटागोनिस्ट होते हैं. So you can see contraindications of ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स. ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स किस में कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं? ऑलरेडी अपन ने देखा है कि पेप्टिक अल्सर, हाइपरटेंशन, इन्फेक्शन, डायबिटीज मेलिटस, वायरल इन्फेक्शन ऑफ आइज, देन ओस्टियोपोरोसिस, साइकोसिस, एपिलेप्सी, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, ग्लाकोमा, रेनल फेलियर. तो देखो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स दे आर एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन केस ऑफ कुशिंग सिंड्रोम. कुशिंग सिंड्रोम अगर है तो उसमें एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन है. Absolutely contraindicated in case of Cushing syndrome. It can develop continued a high dose of glucocorticoids therapy. अगर ज़्यादा डोज ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का दे देंगे तो कुशिंग सिंड्रोम हो सकता है. कुशिंग सिंड्रोम है तो उसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड. देन दे आर है ना, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आर रिलेटिवली कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन केस ऑफ पेप्टिक अल्सर, क्योंकि वो डिक्रीज करता है म्यूकोजल रेजिस्टेंस बाय पीजी सिंथेसिस. हाइपरटेंशन में भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्यू टू
है ना, mineralocorticoid activity. Diabetes mellitus may be contraindicated due to hypercholesteremia. Congestive cardiac failure may be contraindicated क्योंकि again mineralocorticoid activity will increase the preload, है ना, and myocardial infection में भी contraindicated है, we have seen. ठीक है, क्या होता है देखो, हाई डोज ऑफ एक्सोजिनस कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, हाई डोज ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स, मतलब हाई डोज ऑफ दीज कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स फॉर लॉन्गर पीरियड मोर देन 7 days inhibit the hypothalamus as well as pituitary hormone CRF as well as ECDH. And now if you sudden withdraw or sudden stop the steroid, what will happen? That will lead to non-functioning of HPA axis, and that will result a sign of hypocortisolemia मतलब hypocortisolemia मतलब cortisol कम होगा, and in such cases therefore drug should not be gradually, that should be not withdrawn suddenly, that should be withdrawn gradually. तो एक ही टाइम पे बंद नहीं करना है वो ड्रग, धीरे धीरे करके बंद करना है. तो इनहिबिटर्स ऑफ एड्रेनल स्टेरॉइडल सिंथेसिस, तो एड्रेनल ग्लैंड के जो स्टेरॉइड कॉर्टिजोल, हाइड्रोकॉर्टिजोन, इनके सिंथेसिस कौन इनहिबिट करता है? तो ड्रग्स विच इनहिबिट द एड्रेनल स्टेरॉइड सिंथेसिस. तो फर्स्ट वन इज अ मेटायरापोन is inhibitor of 11 beta hydroxylase enzyme which is involved in the synthesis of glucocorticoids. ये जो एंजाइम है 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज वो इन्वॉल्व होता है सिंथेसिस में. सो मेटायरापोन इनहिबिट द 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज inhibit the synthesis of glucocorticoids, and that is used in the diagnosis and treatment of Cushing's syndrome. It is the only safe drug in the pregnancy. ये एक ही ड्रग सेफ है इस क्लास में से, इस कैटेगरी में से, इस ग्रुप में से, मेटायरापोन. देन सेकंड ड्रग होता है अमाइनोग्लूटेथिमाइड, also inhibitor of enzyme required for the cholesterol side chain cleavage. जो कोलेस्ट्रॉल के साइड चेन C27 उसको ब्रेक डाउन करने के लिए जो एंजाइम लगता है उसको इनहिबिट करने वाला कौन है? अमाइनोग्लूटेथिमाइड. दैट हेल्प्स, है ना. ये एंजाइम क्या है? ये एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर द कन्वर्टिंग कोलेस्ट्रॉल टू प्रेग्नेनोलोन, so it inhibit and prevent the synthesis of steroids. Also inhibit the aromatase enzyme useful in the breast cancer. aromatase अपन बाद में देखेंगे. Then mitoten again causes the atrophy of zona fasciculata, zona reticularis without affecting the zona glomerularis, है ना. Reducing the corticosteroids and used in the medical adrenectomy. जब adrenal gland का रिमूवल किया जाता है तब उसमें यूज करते हैं. Then trilosten, mitoten, trilosten. Trilosten is a 3-beta hydroxysteroid dehydrogenase inhibitor. 3-beta hydroxysteroid dehydrogenase inhibitor. Enzyme required for the production of adrenal and gonadal hormones. ये जो एंजाइम है इंपॉर्टेंट होता है, required for the production of adrenal and gonadal hormone. Also inhibit the aromatase. तो trilosten. Then next one है कीटोकोनाजोल. कीटोकोनाजोल क्या है? It is anti-fungal drug होता है, used in the Cushing syndrome. Inhibitor of 17 alpha hydroxylase and 3 beta hydroxysteroid dehydrogenase. Then corticosteroid receptor antagonist कौन है? corticosteroid receptor antagonist mifepristone is a antagonist to the progesterone as well as glucocorticoid receptor. glucocorticoid receptor and progesterone receptor को antagonize करता है mifepristone. Used in the drug is used in the medical termination of pregnancy. Also postcoital contraceptive है. Rarely it is used in the inoperable patient of Cushing syndrome. Spironolactone, ipreilenone, both are the potassium sparing diuretics. There is one more, drospiron. It is oral contraceptive. All these drugs are the aldosterone antagonist. Drospironone is a contraceptive. Spironolactone, ipreilenone, they are the diuretics. But all these three drugs are antagonists to the aldosterone. So this will end your topic known as glucocorticoids. इसका chemistry अपन बाद में देखेंगे, and next lecture will be on
your anatomy physiology, that is a reproductive system.